गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायाम् अथ एकत्रिंशोऽध्याय। नंदीश्वर उवाच। अथ वक्ष मुनिश्रेष्ठ शंभो अवतारकं स्वभक्तदया विप्र नारीसन्देहभञ्जकम् आसीत् सत्यरथो नाम्ना विदर् भविष्य नृप धर्मात्मा सत्यशीलक्ष महाशैव जनप्रिय तस्य राज्ञ सधुर्मेन महीपालयतो मुने महान् कालो व्यतीयाय सुखेन शिवधर्मता कदाचित् तस्य राज्ञस्तु शालवैक्षपुरोधिभिः महान् रणो बभूवाथ बहुसैन्यैर्बलोद्वते स विदर्भ नृप कृत्वा सार्धं तैर्दारुणं रणं प्रणष्टोरुबलाशाल वै निर्हतो दैवयोगता तस्मिन् नृपे हते युधे शालवैस्तु भयविह्वला सैनिका हतशेषाक्ष मन्त्रिभिः स दुद्रुवु अथ तस्य महारागी रात्यो स्वपुरतो मुने संरुदा रिपुभर्यत्नादन्तर्वर्तनी बहिर्ययो निगर्ता शोकसन्तप्ता सा राजमहिषी शने प्राचीदिशं ययो दूरं स्मरन्ती शपदाम्बुजम् अथ प्रभाते सा राज्ञी ददर्श विमलं सरा अतीता दूर्मध्वानं दयया शङ्करस्य हि तत्रागत्य प्रिया राज्ञ सन्तप्ता सुकुमारिणी निवासार्थं सरस्तीरे छायावृक्षमुपाक्षयत् तत्र दैववशाद्रागी मुहूर्ते सद्गुणान्विते असूततन्यं दिव्यं सर्वलक्षणलक्षितम् अथ तज्जननी देवात्रिषिताति निरपङ्गना सरोवरतीर्णा पारनाथं ग्रस्ताग्राहीन् पाथसी स सुतो जातमात्रस्तु शुक्तिपास साधृतो भृशं रुरोध च सरस्तीरे विनिष्टभृत्मातृक तस्मिन् वने क्रन्धमाने जातमात्रे सुते मुने कृपाविन्दु महेशो भूदन्त्यार्यामी स रक्षका प्रेरिता मनसा काचिदिशेन त्रासारिणा अक्षमादागता तत्र भ्रमन्ति भैक्षजीवनी सात्वयेकहायनं बालं वहन्ति विधवा निजम् अनाथमेकं क्रदन्त्रिंशु तत्र दर्श सः सा दृष्ट्वा तत्र तं बालं वने निर्मुन्नजे मुने विस्मतातिदिज स्त्री सा चिन्तितं हृदये बहु अहो सुमहदाश्रयमिदं दृष्टं मयाधुना असम्भवाय कथ्यं च सर्वथा मनसा गिरा अच्छिन्नाभिन्नलोऽयं रस्यायं केवलं शिशुशिते मात्र विहीनक्ष कन्द्रतेज स्विनाम्बर अस्य पित्रादये केऽपि न सन्तीह सहायिना कारणं किं बभूवाथ हाहो देव बलं महत् न जाने कस्य पुत्रो यस्मस्य ज्ञातात्र कोऽपि न यथा पृच्छामि यस्य जन्मजाता च करुणामयी इच्छामेन पोषितुं हि बालमौरसपुत्रवत् सम्पृष्टं नोत सहे ज्ञात्वा कुलजन्मादि चास्य वे नन्दीश्वर उवाच इति सञ्चित्य मानायां तस्यां विप्रस्त्रियां कृपां चकार महन्ती शङ्करो भक्तवत्सला तद्रे भिक्षुस्वरूपं हि महालीलो महेश्वरा स्वर्था भक्तसुखदो निरूपाधि स्वयं सदा तत्र जगाम सहसा स भिक्षु परमेश्वरा यत्रास्ति सन्देहवती दिच्छस्त्री ज्ञातुमिच्छति भिक्षुवर्यस्वरूपो सावविज्ञात गति प्रभुतामाह विप्रवनितां विहस्य करुणानिधि भिक्षुवर्य उवाच सन्देहं कुरु नोचिते विप्रभामिनीमाखिदा रक्षेणं बालकं प्रीत्या सुपवित्रं स्वपुत्रकम् अनेन शिशुनाशया प्राप्यस्येन चिरात् परम् पुष्णिः सर्वर्थाहो नं महातेजस्वनी शिशुं नन्दीश्वर उवाच इत्युक्तवन्तं तं भिक्षुस्वरूपं करुणानिधिं सा विप्रवनिता शम्भु प्रीत्या प्रापच सादरं विप्रवनितोवाच
विप्रन्वितोवाच त्वय्दाज्ञयेन बालं हि रक्षयामि स्वपुत्रवत् भोक्ष्यामि नात्र सन्देहो मदाज्ञात् मिहागता तथापि ज्ञातुमिच्छामि विशेषेण तु तत्त्वता कोऽयं कस्य सुताक्षायं कस्तवमत्र समागता मुहुर्मम समायाति ज्ञानं भिक्षुवर प्रभो त्वं शिव करुणा सिन्धुस्त्वदत्तोऽयं शिशुपुरा केनचित् कर्मदोषेण सम्प्राप्तोऽयं दशामिमां तदुक्त्वा परं श्रेय प्राप्स्यते त्वदनुग्रहात् त्वन्माययैव साहं वे मार्गभ्रष्टा विमोहिता आगता प्रेषिता तत्त्वतो हास्यरक्षण हेतुता नन्दीश्वरवाच इति तदर्शन प्राप्तविज्ञानां विप्रकामिनीं ज्ञातुकामा विशेषेण प्रोचे भिक्षुतनुशिवा भिक्षुर्वाच शृणु प्रीत्या विप्रपत्नी बालस्यास्य पुरेहितं सर्वमन्यस्य सुप्रीत्या वक्ष्यते तत्त्वतो नघे सुतो विदर्भराजस्य शिवभक्तस्य धीमता अयं सत्यर्थ स एव स्वधर्मनिरतस्य हि शृणु सत्यर्थो राजा हताशाल्वेरणे परे तत्पत्नी सुव्यग्रा निर्ययो स्वगृहाद्रुतं सूततन्यं चैनं समायतापग्रेत्र हि सरोवर्तीना तृष्यया ग्रस्ताग्राहेण दैवता नन्दीश्वरवाच इति तस्य समुत्पत्तिं तत्पितो सङ्गरे मृतं तन्मात्रं मरं ग्राहात् सर्वतस्यै वेदयत् अथ सा ब्राह्मणी चैव विस्मत्तातिमुनीश्वर पुनः प्रपच्छ तं भिक्षुं ज्ञानिनं सितुरूपकं ब्रह्मण्युवाच स राज्ञो स पिता भिक्षो वरभोगन्तरैव हि कस्माच्छालवेश्वरीपुभिः स्वल्पे हैक्षविघातिता कस्मादस्य शिशोर्माता ग्राहेणाशु सुभिक्षिता कस्मादानाथोऽयं जातो बन्धुशैव जन्मता कस्मात् सुतो ममापयः सुदरिद्रो हि भिक्षुका भवेत् कथं सुखं भिक्षो पुत्रयोरनयोर्वदा नन्दीश्वरवाच इति तस्या वचा श्रुत्वा स भिक्षु परमेश्वरा विप्रपत्न्या प्रसन्नात्मा प्रोवाच विहंसंक्षतां भिक्षुर्वाच विप्रपत्नी विशेषेण सर्वप्रश्ना वदामि ते शृणु त्वं सावधानेन चरित्रमिदमुत्तमम् अमुष्य बालस्य पिता स विदर्भमहीपति पूर्वजन्मनि पाण्ड्योच्चो बभूव नृपसतं स शैव नृप्रतिधर्मात् पालयन्निखिलां महीं स्वप्रजा राजयामास सर्वोपद्रवनाशना कदाचित् तस्य हि सर्वेषां प्रदोषे परपूजयत् त्रयोदश्यां निराहारो दिवानक्तव्रती शिवं तस्य पूजयत् शम्भो प्रदोषे गिरिशं रते महान् शब्दो बभूवाथ विकटा सर्वथा पुरे तमाकर्ण्य रवंसोऽथ राजा त्यक्तशिवार्चना रिपवागमनं शाक्तो निर्ययो भवनाद्वहि एतस्मिन्नेव काले तु तस्य मात्यो महाबली गृहीतशस्त्रसामन्तो राजान्ति कमुपाययो त्वं दृष्ट्वा शत्रुसामन्तं महाक्रोधेन विह्वला अविवचार्य वृषन्तस्य शिरश्छेदं कारयत् अस्माप्यश पूजां तां शुचिर्नष्टधीर्नृपा रात्रौ चकार सुकृत्या भोजनं नष्टमङ्गलं विदर्भे सौभद्राजा जन्महिनीह शिव्रती शिवार्चनात्तरायेण परे भोर्गन्तरे हता तत्पिताय पौर्भवे सोऽसिमञ्जन्मनि तत्सुता अहमेव हतैशर्व्य शिवपूजा व्यतिकरमात् अस्य माता पूर्भवे सपत्नी ध्यान हरत् भक्षिता तेन पापेन ग्राहेणास्मिन् भवे हि सा एषा प्रवृत्तिरेषतेषां
भवत्ये परिकीर्तिता अनर्चिता शिवा भक्त्या प्राप्नुवन्ति दरिद्रताम् एष ते तन्यपूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमा प्रतिगर्भयोनिन्य न यज्ञाय सकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्ना पुत्रस्ते द्विजभामिनी तदोषपरिहारार्थं शरणं शङ्करं व्रज इताभयं खलु बालाभ्यां शिवपूजा विधीयताम् उपवीतानतरं हि शिवशेय करिष्यति नन्दीश्वरवाच इति तामुपदिशाथ भिक्षुवर्य तनुशिवा स्वरूपं दर्शयामास परमं भक्तवत्सला अथ सा विप्रवनिता ज्ञात्वा तं शङ्करं प्रभुं सुप्रणम्य हि तुष्टाव प्रेमना गदया गिरा तथा स भगवान् शम्भुर्धृतभिक्षु तनोर्धृतं पश्यन्ता विप्रपत्न्यास्तु तत्रैवान्तरधीयत अथ तस्मिन् गते भिक्षो विक्षुब्धा ब्राह्मणी च सा तं भर्कं समादाय सस्वपुत्रा गृहं ययो एकचक्राहवे रम्ये ग्रामे कृतनिकेतना स्वपुत्रं राजपुत्रं च वरानक्षयर्वदत् ब्राह्मणे कृतसंस्कारो कृतोपन्यानोचतो विवर्धाते स्वगेहे च शिवपूजन तत्परो तौशाण्डिल्यमुनेस्तात निदेशान्यमस्थितो प्रदोषे चक्रतु शम्भो पूजा कृत्वा व्रतं शुभं कदाचित् द्विजपुत्रेण विनोत्सो द्विजनन्दना नद्यां स्नातुं गता प्राप निधानकलशं वरम् इवं पूज्यतो शम्भु राजद्विजकुमारयो सुखेनैव व्यतीयाय तयोर्मासचतुष्टयम् एवमर्चयतो शम्भु भूयोऽपि परया मुदा संवत्सरो व्यतीयाय तस्मिन्नेव तयोर्गृहे संवत्सरे व्यतिक्रान्ते स राजतनयो मुने गत्वा वदनान्ते विप्रेण शिवस्यानुग्रहादिभव अकस्मादागतं तत्र दत्तातज्ज्ञकेन विवाह गन्धर्वस्तुं चक्रे राज्यं कण्टकं या विप्रान्निता पूर्वं तं पुष्णात् स्वपुत्रवत् सैव माता भवतस्य भ्राता द्विजनन्दनन् हितमाराध्य देवेशं धर्मगुप्ताव्यस वै विदर्भविष्यराज्ञया त्या भोगं चकारः भिक्षुवर्यावतारस्ते वनिर्तक्ष मयाधुना शिवस्य धर्मगुप्ताहन् नृपालसुखप्रदा एतदाख्यानमनघं पवित्रं पावनं महत् धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं सर्वकामदं य एतत् शृणुयात् नित्यं श्रावयेदासमाहितं स भुक्तेहाखिलान् कामान् सोन्नते शिवपुरं व्रजेत् इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शत्रुरूधसहितां भिक्षुर्याशिवावतार चरित्रवर्णनं नामैकत्रिंशोऽध्यायः।